Good morning, class 11. This is your subject accountancy, chapter number 10, GST, lecture number 4. Beta, in our last previous lecture, we have done questions about question second and third question number. In second question, there was actually some calculation mistake, so I'm going to tell you that entry again. SGST account debit to input CGST to input SGST to bank account. So this amount was correct, 43,650. It is also correct, 51,300. But 60 in place of 69, in place of 72,000 something, it will come 69,300. Because we have done output CGST and SGST, we have adjusted through 72,000 minus 2,700. Fine. So that will be 69,300. Whenever we calculate this amount like net SGST paid or CGST paid, we'll calculate like 69,300 minus 43,650. That will be 25,650. Net SGST paid, same amount. So amount will go to bank like 51,300. Fine. So now you can also correct it in your fair notebook. Fine. Wherever you are practicing, and you have to do it in your fair notebook as well with the correct amount. Let's see next question. It is your next question. Pass entries for the following transactions in the books of Messrs. Karthikeyan and Company of Chennai. They are saying purchase goods from Ravindra Chandran of Madurai at the list price of 2 lakh at 25% trade discount and 4% cash discount on purchase price. And they are also saying beta, at the last of the question, ignore adjustment and payment of GST. So we will do simple entries of June 10 and June 25th. First of all, let's see June 10. First of all, purchases account debit, input CGST account debit, input SGST account debit to bank account. So 2 lakh का 25% आएगा आपका 50,000. 2 lakh में से 50,000 माइनस करेंगे 1,50,000. That will be purchases. Fine. In purchases account. So purchases account 1,50,000. Input CGST and SGST. It is already given CGST and SGST amount 9%. We have to calculate 9%. Fine. So 1,50,000 का 9% कैलकुलेट करेंगे वो आएगा आपका 13,500. Fine. So input CGST 13,500, input SGST 13,500 to discount received account. Discount received, they are saying 4% trade discount we have to avail. So 4% of 1,50,000, that will be 6,000. Understood? सबसे पहले हम 2 लाख का 25% कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी 50,000. 2 लाख में से 50,000 माइनस करेंगे, 1,50,000 विल बी इन योर परचेज अकाउंट. फाइन. इनपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी हम 1,50,000 का कैलकुलेट करेंगे 9%, दैट विल बी 13,500. अब डिस्काउंट रिसीव्ड में जो अमाउंट आएगी वो आएगी 1,50,000 का 4% कैश डिस्काउंट, दैट विल बी 6,000. सो रेस्ट ऑफ द अमाउंट विल गो टू बैंक. Fine, because see it is the given. Last line, paid the entire amount by check on the same day. तो check के through payment की हुई है, that's why we will have to do to bank account. Understood? So finally the entry will be purchases from Ravindran at rate of 25% trade discount and 4% cash discount. I told you also 2 lakh का trade discount minus करेंगे 50,000, that will be 1,50,000. इसमें ऐड करेंगे CGST and SGST 13,500, 13,500. फाइन. तो टोटल विल बी 27,000 एंड कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे ये आएगा आपका 6,000. अमाउंट पेएबल 1,71,000. फाइन. You have to show this working note as well. Whenever you are doing question, you have to show this working note as well. So finally you have to do entry like this.
लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट एंट्री. दे आर सेइंग सोल्ड गुड्स. पहले वाले में हमने परचेज गुड्स किया था, अब हमने सोल्ड गुड्स किया है. टू Ramalingam of Erode of the list price of 3,75,000 at 20% trade discount. So first of all we'll calculate 3,75,000 ka 20% 75,000. The amount will be 3 lakh. Now add input CGST and SGST. 9%, 9%. That will be 27,000, 27,000. Total will be 54,000. Now the amount is 3,54,000. इसमें से आप cash discount minus करेंगे 2%. That will be 6,000. So now the amount payable is 3,48,000. So the entry will be like bank account debit, discount allowed account debit to sales account to output CGST to output SGST. Sales account में already 3 lakh, output CGST and SGST we have calculated it right like now 27,000, 27,000. Discount allowed 6,000 we have already calculated it and bank में आपकी amount जाएगी 3,48,000. Understood this entry? So you don't need to do any adjustment and payment of GST. Fine. You have to do these entries as like. So let's start next question. This is the question. You read this. See at last ignore adjustment and payment of GST. So we will have to do the normal entries of it. First of all, first entry is bought goods from Nanak Brothers 4 lakh at 10% trade discount, 3% cash discount on purchase price, 25% of the amount paid at the time of purchase. The next entry is beta that bought goods from Nanak Brothers, okay, for 4 lakh at 10% trade discount and 3% cash discount on purchase price. So 25% of the amount paid at the time of purchase. Beta, first of all, we will have to calculate 4 lakh ka 10%, that will be 40,000. तो 3,60,000 आपके चले जाएंगे परचेजेस अकाउंट में. इनपुट CGST एंड SGST निकालेंगे आप लोग. फाइन. वो आएगा आपका 32,400, 32,400. And now the main amount is to cash account, to Nanak Brothers and to discount receipt. Basically we can say to bank account because they are saying they did not say that they have paid in bank or cash, check or cash. So we will have to do cash account. Fine. So how much amount will go in cash, how much will go in Nanak Brothers and how much will go in discount receipt? Let's see. First of all, we will have to calculate 75% of 4,24,800. कहाँ से आया ये अमाउंट? इन तीनों को ऐड कीजिए. 3,60,000 प्लस 32,400 प्लस 32,400. The amount will be 4,24,800. इसका 75% will go like 3,18,600 to Nanak Brothers because ये वो वाला अमाउंट है 75% जो उसने अभी पे नहीं किया है, तो नानक ब्रदर्स में जाएगा. अब जो पे किया है वो क्या है बेटा? 25% ऑफ 4,24,800. इसका कैलकुलेट कीजिए. 25% ये आएगा आपका 1,06,200. फाइन. अब 1,06,200 तो हमारा टोटल अमाउंट आ गया, मतलब 25% ऑफ 4,24,800. बट इसमें से कितना डिस्काउंट है और कितना कैश है, कैसे कैलकुलेट करेंगे?
सबसे पहले हम कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होगा आपका, ध्यान से सुनिएगा अमाउंट को, 3,60,000 का 25%, वो आएगा आपका 90,000। 90,000 का 3%, 3,60,000 जो आपका परचेज का अमाउंट है उसका 25% कैलकुलेट कीजिए, 90,000 विल कम। 90,000 का 3% कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा आपका 2,700। ये 2,700 आपका डिस्काउंट रिसीव का अमाउंट है, एंड रिमेनिंग वन विल गो इन कैश अकाउंट। अंडरस्टूड? सबसे पहले वी विल कैलकुलेट ट्रेड डिस्काउंट, विल राइट परचेजेस अकाउंट इन द अमाउंट, fine, then we will calculate CGST, SGST, we will write both the amount, then we will calculate 75% of 4,24,800, we will write that amount in Nanak Brothers, and then we will calculate beta cash discount, and we will write the amount in cash and discount received. Understood? So this is the entry. Next one is, our next entry is 50% trade discount and 5% cash discount on sale price. On sale price they told, and 60% of the amount received by check. Fine. कुमार एंड सन्स से को सामान सेल किया तो डेफिनेटली दी एंट्री विल बी कुमार एंड सन्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे 2 लाख का 20%, कितना आएगा आपका 40,000। तो 2 लाख में से 40,000 माइनस कीजिए, 1,60,000 विल कम, and 1,60,000 will go in sales account. Fine. Now we will have to calculate output CGST and SGST. That will be 9% of 1,60,000. That will be 14,400, 14,400. Understood? तो सेल्स, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी की अमाउंट तो आ चुकी है। अब हम देखते हैं कुमार एंड सन्स बैंक और डिस्काउंट अलाउड में हमें कैसे अमाउंट डालनी है। फाइन बेटा, सबसे पहले तो आप इन तीनों का टोटल कीजिए। सेल की अमाउंट 1,60,000 प्लस 14,400 प्लस 14,400, ये आपका आएगा 1,88,800। इन्होंने बोला है, अब एंट्री में देखिए 60% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, 60% चेक के थ्रू रिसीव हो गई है और 40% रिसीव नहीं हुई है। तो जो रिसीव नहीं हुई है वो अमाउंट तो कुमार एंड सन्स में चली जाएगी। फाइन। पर 40% किस अमाउंट का कैलकुलेट करेंगे हम कैलकुलेट करेंगे 40% ऑफ 1,88,800। ये अमाउंट कहां से आया हमारे पास? ये अमाउंट आया हमारे पास सेल्स में से प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, इन तीनों को ऐड करेंगे, आपका आएगा 1,88,800। फाइन। तो इसका आप इसका 40% कैलकुलेट करेंगे, वो आएगा आपका 75,520, वो आपका कुमार एंड सन्स में जाएगा। फाइन। अब बैंक और डिस्काउंट अलाउड में कितना अमाउंट जाएगा ये हम कैलकुलेट करते हैं। फाइन। तो अब सबसे पहले देखेंगे कैश ट्रांजेक्शन या चेक के थ्रू ट्रांजेक्शन क्या हुई है हमारी 60%, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, 60% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। फाइन। तो 60% ऑफ 1,88,800 कैलकुलेट करेंगे, वो आएगा आपका 1,13,280। बेटा ध्यान से सुनिएगा, 1,88,800 जो आपका सेल, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी का अमाउंट है, उसको टोटल करेंगे, उसका 60% कैलकुलेट करेंगे, वो आएगा आपका 1,13,280 रुपीज। फाइन, ये लिख लेंगे हम। इसके बाद हमें कैश डिस्काउंट निकालना है। अब कैश डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? इन्होंने बोला कैश डिस्काउंट वी विल हैव टू कैलकुलेट ऑन सेल प्राइस। सेल प्राइस क्या था? सिर्फ 1,60,000 था ना, तो 1,60,000 का 60% कैलकुलेट कीजिए, कितना आएगा आपका 96,000। इसका 5% निकालिए, ये आएगा आपका 4,800। अंडरस्टूड? इन दिस वे यू विल हैव टू डू द एंट्री। अब 4,800 को 1,13,280 में से माइनस कीजिए, आएगा आपका 1,08,480 रुपीज। फाइन। अंडरस्टूड हाउ क्रेडिट एंड कैश अमाउंट विल कम? So in this way you will have to do this entry. Next entry is
Received from Gopi Chand 38,000 by check after deducting 5% cash discount. बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गोपी चंद. इन्होंने बोला 5% कैश डिस्काउंट. इसका मतलब आफ्टर डिडक्टिंग है. इसका मतलब हमें 40,000 अमाउंट थी जिसमें से हमने 5% कैलकुलेट किया. 40,000 का 5%, 2,000 इज देयर. तो रिमेनिंग अमाउंट 38,000 in bank we will get do. Fine, we will write in bank. So the narration is received from Gopi Chand in full settlement. Fine, beta. So our next entry is paid 20,000 for rent by check. तो रेंट अकाउंट डेबिटेड 20,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड 20,000 का हाउ मच 9% 1,800. Input SGST account debited 1,800 to bank account. Total amount will go there in bank account like 20,000 plus 1,800 plus 1,800. So finally the narration will be paid for rent. Next one is they are saying that they have to pay salary by check. So salary payment is here by check. So salary is 50,000. Fine. So beta on salary we will not calculate any inputs SGST or CGST. I told you whenever I told this basic of this chapter. Fine. So wages, salary, electricity, water bill, traveling expenses, bad debts recovered, इन सब पे GST नहीं लगता है. Fine. तो salary account debited to bank account 50,000. Like the narration will be paid salaries. Distributed as free sample. तो जब भी हम goods distribute करते हैं as a free sample, we will calculate it in advertisement account, isn't it so? So advertisement account debited to purchases account, to input CGST account, to input SGST account. So amount is 10,000 and CGST will be 10,000 का 9% 900, SGST will be 900. Total amount will go in advertisement account 11,800. And finally the narration will be goods distributed as free samples. Fine beta. Next one is entry number 7. 5,000 due from Chandrakant are bad debts. So bad debts account debited to Chandrakant account, debtor pro bad. 5,000 5,000. I told you now the bad debts on the amount of bad debts also we won't calculate SGST or CGST. Fine. So next one is sold household furniture for rupees 15,000 and proceeds were invested into business. इसने बोला household furniture बेचा लेकिन उसको बेच के business में invest कर दिया. Fine. तो business में cash आया. Whenever it is invested, the amount is invested into the business, the entry will be the same cash account debit to capital account with rupees 15,000 and the narration will be invested money into business. So total will be 7,59,000 of both the sides of debit and credit, both the sides. Fine beta. So this was the question. Question number 5th. You have it is your homework that you have to do till question number 5th in your fair notebook. Fine. Along with the illustration, practice of illustration is necessary beta. Fine. That is also given in your book on page number 10.12 to 10.15. Fine beta. And also it's my humble request to send me your homework on daily routine.